again I'm writing same thing. How to run code using Java compiler, not using online compiler. अच्छा, सब लोग मोबाइल में हो या लैपटॉप में? जो लोग मोबाइल में हो चेंज कर लो, लैपटॉप ऑन करो. So first we have to write the class, then class name. Suppose test 49 today's date. Then write public static void main. So much to us. Okay, class test, then public static void main, then suppose maximum of 3 number. How to write maximum of 3 number? First declare 3 variable A, B and C. Okay, then initialize the variable A equals to, suppose write the hard coded. Basically I'm giving the fixed value, so A 10, B 25 and C equals to 7. Then the logic, Sajjan Kumar, hello. আমার কথা শোনা যাচ্ছে ম্যাম? Clearly audible. আচ্ছা, ঠিক আছে. সজ্জন কুমার, okay. Sayantan, Yes, sir. how to write the logic to check the maximum of 3 number? তাড়াতাড়ি বল. Maximum of 3 number. Anyone? Quick. Rohit পারবি? Rohit? কি অবস্থা তোদের? সৌমিতা? হ্যাঁ স্যার। বল কি হবে? কি বলবো স্যার, মানে ম্যাক্সিমাম কি করে হবে? Maximum of 3 number. Logic. If A greater than B and A greater than C, then A is the maximum number. তো কি লিখবো এখানে আমি? Dot System dot out println. Then A is the maximum number. A is max. A is max. Okay, fine. Next কি লিখবো? Else বল. Else if B greater than A and B greater than C, Then কি হবে? system dot out println B is max. Good. Next হচ্ছে else C greater than A and C greater than B. No need to write any condition. Oh, if A is greater, then it will print the A's value. If otherwise B is max. If A and B not greater than, then obviously C is greater. So in the case of C, we didn't write any logic. Okay, then just
close the main and then close the class. Then the procedure, then copy the class name and save it as test underscore. अच्छा हम टेस्ट सेव कहाँ करेंगे, जावा प्रोग्राम बोल के फोल्डर है, अंडर दैट the file name is test underscore 14 underscore 9 dot java. Okay, save the file, then open the cmd. जब हम लोग cmd ओपन करेंगे, at that time this is the default path. C users administrator or C user your username basically. Then we have to go that drive using d colon. Okay, after that change the directory using cd space that folder name. मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इस फोल्डर तक थे, इसलिए हम डी कोलन देके ही बेसिकली उस फोल्डर तक आ गए. अदरवाइज यू हैव टू राइट द अच्छा you have to write after d cd space java program. My folder name is java program. Okay, then now I am in within the java program. Then after that write the java compiler java c, then the class name test 14.9 under dot java, compile the code. After compiling, you have to run using java space only file name. So this is my output. 25 is max out of abc 10 25 7. ठीक है, क्लियर? सर अगर ए और बी इक्वल होगा तो फिर सी इज मैक्स आ जाएगा. नहीं, हाँ उसके लिए हम कंडीशन नहीं लगाए, उसके लिए हम कंडीशन नहीं लगाए. हम बेसिकली जो कंडीशन दिए, जो वैल्यू दिए, दैट इज बेसिकली नॉट इक्वल टू ईच अदर. ओके, बोथ आर ऑल आर डिफरेंट वैल्यूज. उसके लिए क्या करना होगा, फिर से तुमको चेक करना होगा इफ ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू सी, कंडीशन और भी ज्यादा होगा. क्लियर? एनी डाउट्स? बोलो, किसी का कुछ प्रॉब्लम है? कारो किसी प्रॉब्लम থাকলে বল. हाँ सर, कमांड प्रॉम्प्ट पे सर फाइल को रन करवा, कमांड में प्रॉब्लम है सर थोड़ा. हाँ बोलो बोलो, कमांड प्रॉम्प्ट में फाइल का जो रन करवाए सर, उस फाइल को कैसे रन करवा, उसका कमांड में प्रॉब्लम है. अच्छा, तो स्टेप्स हम फिर से दिखाएं? हाँ सर. अच्छा, बेसिकली तुम क्या करोगे, फर्स्ट तुम अपने कोई भी ड्राइव में तुम अपने फोल्डर बनाना, फोल्डर जिसमें तुम प्रोग्राम सेव करोगे. तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जावा बोल के एक फोल्डर है, जावा एग्जांपल है, जावा प्रोग्राम है. ठीक है, तो इस तरह से तुम एक फोल्डर क्रिएट करना, कौन सी ड्राइव में देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट तुम नोटपैड में जो तुम कोड लिखे बेसिकली टाइप करने के बाद, I'm giving you the code in the chat box. Control V. Okay. So ये कोड तुम कहाँ पे लिखोगे, नोटपैड में टाइप करोगे या कॉपी पेस्ट करोगे. देन आफ्टर सेव द फाइल. ओके, कौन सी लोकेशन में सेव करोगे, जिस फोल्डर तुम अभी जो बनाए, जिसके अंदर तुम जावा प्रोग्राम सेव करोगे, उस फोल्डर तक जाओगे. वो तो कैसे जाओगे पता है, डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम के अंदर, देन यू हैव टू राइट ओनली द क्लास नेम, जिस क्लास के अंदर तुम मेन पब्लिक स्टडी वॉइड में लिखे हो. सो दिस क्लास नेम इज टेस्ट अंडरस्कोर 14 अंडरस्कोर 9 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द एक्सटेंशन, जावा कोड का एक्सटेंशन है डॉट जावा. ओके, सो द फाइल नेम इज टेस्ट अंडरस्कोर 14 अंडरस्कोर 9 डॉट जावा. आफ्टर दैट सेव इट, सेव हो गया. नेक्स्ट यू हैव टू ओपन द cmd, जस्ट रन में जाके cmd ओपन करो. द डिफॉल्ट पाथ इज दैट सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर. मेरे कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर है, तुम लोग का कंप्यूटर में दूसरा कुछ होगा, मतलब तुम्हारा अपना नाम होगा, यूजर्स नेम.
then I have to move the particular that folder जहाँ पे हम program save किए. So first I have to give the drive name with colon. So मेरा drive क्या है D then colon. So automatically हम C से D drive में move कर गए. Then CD का full form है change directory. Change directory कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे मेरा program है. कहाँ पे? Java program. ठीक है, तो हम जावा प्रोग्राम में अंदर गए, मतलब अभी हम कहाँ पे करेंटली वी आर इन डी जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर. देन राइट योर कंपाइलेशन कोड जावा सी देन स्पेस टेस्ट अंडरस्कोर देके जो फाइल है 14_9 डॉट जावा. देन रन करने के लिए क्या है जावा स्पेस ओनली फाइल नेम. सो 25 इज मैक्स. ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके फाइन. नाउ बेसिकली ये जो वैल्यू हम लिए हार्ड कोडेड वैल्यू लिए 10, 25 एंड 7, अगर ये वैल्यू यूजर्स के थ्रू लेते, ठीक है, अगर ये वैल्यू इफ आई टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर देन लाइक इन सी like scanf, using scanf we can take the input from the keyboard. So in Java if we want to take the input, first we have to write import statement. It is like has include statement in C, similar to that statement basically. तो C में basically वो था header file और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे package. So using import statement we have to import some package and package में क्या है, package में some package contains some classes, interfaces and sub package also. अब what is package, क्यों हम package मतलब use करेंगे, इसका detailing class में बोला जाएगा, theory class में. Just we have to remember that for import for taking the input we have to import java.util package util.star. Okay, import java.util.star semicolon. Now basically I have to write here one statement like scanner sc equals to new scanner within bracket system dot in. দেখতে পাচ্ছিস সবাই তোরা? রেসপন্স দিবি ক্লাসে কেউ? সমিতা দেখতে পাচ্ছিস ভয়েসটা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে. এতজন ক্লাসে আছিস কি এখন রেসপন্সটা দে, আমি জিজ্ঞাসা করছি এখন. ওকে, তো স্ক্যানার sc equals to new scanner system dot in, এই লাইনটার মানে বেসিক্যালি দিস লাইন ইন্ডিকেট দ্যাট দ্য we create an object of scanner class, we create an object of scanner class name sc. ঠিক আছে, তো যখন আমরা ওকে, so when we create an object of the class particular class, then the syntax is that first we have to write the class name, then the object name, then new operator, then the constructor. This is the constructor. Within constructor we have to pass system.in. Okay, for output purpose we have to write system.out, and for input purpose we have to write system.in. Okay, so basically sc क्या है, sc एक ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली अभी इनपुट लेने के लिए ये ऑब्जेक्ट हमको लगेगा बेसिकली. सो फर्स्ट ऑलरेडी डिक्लेयर a equals to for taking input integer type a equals to sc dot next int फिर से बताइए तो सर. sc dot next int. So sc
नेक्स्ट इन में देखो, नेक्स्ट इन में आई इज कैपिटल, एन इज स्मॉल, एंड देर इज नो स्पेस बिटवीन नेक्स्ट और इन। नेक्स्ट इन के बीच में कोई स्पेस नहीं है। हाँ बोलो, क्या कौन क्या बोल रहे थे, बोल लो। फिर से सर बताइएगा ऊपर वाला स्कैनर वाला लाइन, स्कैनर हाँ हाँ, बोलो, क्लियर नहीं आ रहा है आज। फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा ना सर, इस कौन सा? लाइन को। ये स्कैनर क्लास। एक्चुअली देखो, ये स्टेटमेंट अगर तुम लोग का थ्योरी में क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है, मतलब वो अगर वो हो जाएगा तो इसका भी कॉन्सेप्ट तुमको आ जाएगा, लेकिन अभी तक शायद इतना दूर नहीं गए तुम लोग, मतलब क्लास में। ठीक है, ये हम फिर से रिपीट करेंगे। जस्ट आज के लिए हम दिखा रहे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। इसके लिए हम ये कोड दिखा रहे हैं। इसका डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन हम फिर से देंगे आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट चैप्टर, बिकॉज देर आर सेवरल कीवर्ड्स। ठीक है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑपरेटर, स्कैनर कंस्ट्रक्टर है। सो इसका मीनिंग कब पता चलेगा? जब तुम लोग ये टर्म को समझ लोगे। आज सिर्फ तुम लोग ये बेसिक। Present in this today's class, the student. Today's class we have discussed about the class, object, what is the new keyword. Are you present there? At least this first line, this is scanner SC equal to new scanner, and then first bracket. This line is discussed in the class. ও করেছিলেন আজকে আপনি? Actually ওদের ক্লাস আর অবজেক্ট আর কনস্ট্রাক্টর এইটুখানি একটু বলা হয়েছে, মানে ও আচ্ছা একটা আচ্ছা। ক্লাসই হয়েছে ওদের অ্যাকচুয়ালি। তো এই Okay. লাইনটা অ্যাটলিস্ট বোঝা উচিত। পরে হুম হুম। এই সিস্টেম ডট ইন এগুলো তো একটু পরে আছে, हम्म 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 তো हम्म, পরেই করাবো ওদেরকে। মানে ठीक है। देखो package एक्चुअली, हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या है, देखो बेसिकली जावा में जब हम लोग कोड करेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट है, बट तुमको अभी सब कॉन्सेप्ट बोलने से तुमको समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। बेसिकली जो लोग पहले से जानते हो वो अलग बात है, अदरवाइज जो लोग न्यू सीख रहे हो उसके लिए क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए थोड़ा मतलब थ्योरी में आगे चलो, उसके बाद हम फिर से ये रिकैप कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, so basically to create an object of scanner class, you have to write this line: scanner sc equals to new scanner within bracket system.in. After that, if we taking input in integer mein, then we have to write sc dot next int. Then again for b equals to same line, sc dot next int, and again c sc dot next int. Before again इसके आगे तुम और एक चीज लिख लो कि enter 3 integer value. Enter 3 integer value. ओके, आफ्टर दैट स्कैनर क्लास। ये लाइन तुम ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। मतलब नीचे मतलब आफ्टर स्कैन एफ, सॉरी आफ्टर सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंटलन हम ऊपर लिखे बेसिकली। फर्स्ट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, देन एसओपीएलएन, एंटर 3 इंटीजर वैल्यू, देन ए बी सी इसके अंदर इनपुट आ जाएगा। देन नो नीड टू राइट दिस लाइन। ओके, हम इरेज कर दे इसको। देन द लॉजिक, save the program, control S, then again compile the code, Java C. Okay, after that C, enter 3 integer value, 11, 22 and 6. 22 is max. ठीक है, next
acha, another procedure is there, how to take input from user. This procedure is known as command line argument. Okay, this procedure is known as command line argument. So command line argument में कैसे हम लोग input ले रहे देखो. प्रोग्राम को हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको अभी मत लिखो. अच्छा, और एक चीज, डिफरेंट टाइप वैल्यू इनपुट लेने के लिए, सपोज फ्लोट टाइप वैल्यू लेने के लिए यू हैव टू राइट, ओके, इफ के हटा देते हैं. अच्छा, a is integer, बेसिकली इन दिस प्रोग्राम क्या क्या देखो, इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए नेक्स्ट इंट, फ्लोट वैल्यू के लिए नेक्स्ट फ्लोट, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, और स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट लाइन भी है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन, और सभी को एक ही स्टेटमेंट में हम प्रिंट करके रख दिए. ए प्लस, प्लस का मतलब है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर बेसिकली, ठीक है. कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का मतलब ए इज नॉन स्ट्रिंग वैल्यू, एंड इफ वी added with a string value, यहाँ पे string क्या है, space is the string, then we have to give the concatenation operator. Plus is the concatenation operator. After that, after string, again we have to concatenate any non-string value. So b হচ্ছে non-string value, so then again we have to use this concatenation operator. After b, again we have to show the space, print the space, so it's again concatenation plus operator. Then again c, this space with c, concatenation operator, c के साथ this space, again concatenation operator. Then lastly space with string, concatenation operator. Save it, compile, enter integer number 123, float number 123.456, double number 1234567.89123. String type 123, then 123456. আচ্ছা, এখানে string type-টা নেয়নি দেখছি, string type-টা নেয়নি.
Okay. 12.34, 123.567 ইন্টারেস্টিং ভ্যালু কিছু একটা প্রবলেম হয়েছিল যাক वेलकम ठीक है so this is my output integer value float value double value and string value so in one statement basically we print the integer value float double and string type value ঠিক আছে Yes. okay okay next command line argument yes so using command line we can take the input also okay so कैसे होगा देखो first of all what is command line means when we run the program at that time we are passing the input value run program means like this java space file name then we giving value here suppose 1 2 3 4.56 like high ठीक है जब हम लोग रन करने के टाइम में वैल्यू दे के रन करेंगे इनपुट एंड वो वैल्यू बेसिकली आएगा प्रोग्राम के अंदर दिस प्रोसीड्यूर इज नोन एज कमांड लाइन आर्गुमेंट हम लोग कमांड लाइन में इनपुट दे रहे थे सो दैट आर्गुमेंट बेसिकली वो आर्गुमेंट कहाँ पे आएगा दिस आर्गुमेंट गोज इन द दिस ए एरे अब इस ए एरे से हम लोग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है सो फर्स्ट बेसिकली हम क्या करेंगे देखो फॉर लूप चलाएंगे int I equals to 0 we know that the index of the array start with 0 and I less than a dot length I plus plus उसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे ए कुछ ऐसे दिखाते हैं ए थर्ड ब्रैकेट प्लस प्लस आई प्लस ठीक है कुछ नहीं किया जस्ट हम adding a for loop and this loop basically goes up to a dot length that means इस array का जो length है उस length तक जाएगा 0 to that length under that basically we print the value of the array this array ठीक है इसको control सेव किए फिर इसको कंपाइल किए एंड रन करने के टाइम में क्या होगा कोड क्या है जावा स्पेस देगा ओनली फाइल नेम देन हम वैल्यू पास किए 12.34.56 देन एक कैरेक्टर दिए सपोज क्यू देन एक स्ट्रिंग लिखे जावा देन थोड़ा बड़ा वैल्यू दिए एंटर सी
ये जो वैल्यू हम पास किए, when we run the program java space only file name, after that we are passing 1 2 3 4 5 value. First is 12 which is goes into the 0 position, ठीक है, then 34.56 first position on the one index, q is the single character, ठीक है, second index में गया, java is the character string type value third index में, and last one 3 4 5 6 5 6 5 फोर्थ इंडेक्स में. ये जो वैल्यू हम दिए बेसिकली 12 से लेकर लास्ट तक, ये टोटल वैल्यू एज ए स्ट्रिंग कहां पे स्टोर हुआ, दिस ए एरे के अंदर. आफ्टर दैट फ्रॉम दैट एरे वी एक्सट्रैक्टिंग दैट वैल्यू यूजिंग दैट फॉर लूप फ्रॉम 0 टू लेंथ. इसका लेंथ कितना है, जावा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट दिस लेंथ 1 2 3 4 5, सो 0 to 5 दैट मींस 4. सो हियर इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट किया 0 to 4. क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन इन दिस वे. बेसिकली हम लोग वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं, इस तरह से हम लोग वैल्यू भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है. वो जो मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर जो था, अच्छा सम ऑफ 2 नंबर अगर हम करते हैं इसके थ्रू, तो क्या करेंगे, सम ऑफ 2 नंबर अगर हम करते तो थोड़ा सा चेंजेस होगा. क्या चेंजेस होगा, देखो हम यहाँ पे बेसिकली इंट एक वैल्यू लिए, एक्स वेरिएबल लिए, जिसके पास आएगा फर्स्ट एरे का 0 पोजीशन का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आएगा, एंड आफ्टर दैट इंट सपोज y इक्वल्स टू a 1 पोजीशन. एरे में इंडेक्स ऐसे होता है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, बट कुछ देर पहले हम क्या बोले, दिस टोटल वैल्यू 12 to 3 4 5 6 5, these values stored in the format of string. ये टोटली सब तुम्हारा स्ट्रिंग है. 12 is not the integer value, it is string value. 34.56 is a string value, q is string value, java is string value, all are in string value. So we have to convert this string to integer type. We have to convert this string value to integer type. If the value is integer to integer, if the value is float to float. Okay, so we have to write the रैपर क्लास. यहाँ पे एक रैपर क्लास का जरूरत होगा, तो इसका डिटेलिंग क्लास में जाएगा, मतलब थ्योरी क्लास या लैब क्लास में हम लोग बाद में भी बोलेंगे. सो सिंटैक्स इज दैट स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर डॉट परसेंट, इंटीजर डॉट parseInt within bracket a 0. Okay, again integer dot percent a1. So this line means a of 0, that means this is string value. We have to convert this string value to integer type. So here integer, capital I, integer is a wrapper class. Okay, it is a wrapper class, and parseInt is the method by which we can convert string type to integer type. ठीक है, ये थ्योरी क्लास में या लैब में बाद में भी हम लोग बोलेंगे, रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग आएंगे. So like that, integer dot parseInt, float dot parse float, double dot parse double, इस तरह से कुछ मेथड है. देन अब कन्वर्ट हो गया. अब z इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, सॉरी y. अब इसको प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, प्रिंट या प्रिंटलन जहां कहीं पे भी हो, डबल कोड में sum is z. सेव करो, कंपाइल करो. फर्स्ट एनी चेंजेस कोड के अंदर करोगे तो देन यू हैव टू कंपाइल द कोड. और इसके बाद हम क्या किए, वैल्यू ये दो वैल्यू दिए 12 एंड 34. सी फर्स्ट वैल्यू इज 12,
second value is 34. After that, converting these two value into integer type, then added with it. अगर हम ये नहीं करते तो क्या होता, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर कुछ देता, या अगर ये दो लाइन हम ऑफ कर देते हैं डायरेक्टली, अगर हम इसको z इक्वल्स टू x प्लस वाई करते तो क्या होता, देखो कंपाइल किए, देखो कंपाइल में प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज कैनॉट फाइंड द सिंबल वेरिएबल x. ओके x तो नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी. ओके, कंट्रोल C, V, V 1. अब देखो इसमें क्या आ गया, कंपाइल किए, incompatible type string cannot convert it into integer. String cannot be converted to int. Integer में string, क्योंकि ये जो है a of 1, a dot of 0, these are the basically string type value. तो string को अगर हम यहाँ पे int नहीं लिखे, अगर z लिखते, सॉरी string लिखते, तो इसमें क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा, दिस टू स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा. देखोगे आउटपुट, देखो कंपाइलेशन सक्सेसफुल. आफ्टर दैट 12 and 34, देखो क्या किए, कॉन्कैटिनेशन हो गया, 12 34 एक साथ जोड़ गया, बट सम नहीं हुआ. सम करने के लिए क्या चाहिए, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू राइट दिस इंटीजर डॉट परसेंट, देन एडेड x प्लस वाई. ठीक है, चलो ये सब प्रैक्टिस करना. इस बीच में नेक्स्ट क्लास शायद थर्सडे है ना. सो थर्सडे से हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट के साथ प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे. बोलो इसमें कुछ किसी का डाउट्स है?